हाय। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे द वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स। ओके, इसके अंदर मेनली हम क्या पढ़ेंगे कि जो पैरामीटर्स यूज किए जाते फॉर द मेजरिंग ऑफ द वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स उसको हम देखेंगे, और इसको हम इंडिया के सेंस में भी किस तरह से यूज किया जाता है ये भी हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन 2008 द फोरम फॉर अ न्यू वर्ल्ड गवर्नेंस created an index pertaining to the international governance सिस्टम। तो जो फॉरम फॉर अ न्यू वर्ल्ड गवर्नेंस है, इन्होंने कुछ इंडेक्स क्रिएट किया, ओके, टू मेजर द इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम। द इंडेक्स एम टू प्रोवाइड एनुअल बाइस, ओके, एनुअल बेसिस इमेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नेंस पैटर्न, ओके, इन क्रॉस नेशनल सेटिंग। तो क्रॉस नेशनल हमें गवर्नेंस सिस्टम समझने में ये इंडेक्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। So the index provide a portrait of the governance pattern of individual countries and thus act catalyst to reform in the realm of the national and cross-national level. So to develop a set of quantitative and qualitative indicators in designing the World Governance Index, a complex process required continuing modification and evaluation. So interestingly, in this index, a key goal of governance are clubbed with the Million Development Goals and the Sustainable Development Goals. Okay, so these all are the main key goals for measuring the World Governance Index and for creating the main parameters. Okay, these two main goals are used to create the parameters for the World Governance Index. So what are the parameters? First one is the peace and security, then democracy and rule of law, third is the human rights participation, sustainable development, and fifth is the human development. Okay, so these all mainly these five parameters are used to measure the world governance index. Okay, so thus a concern of good governance have been juxtaposed, okay, with the holistic development goal. Okay, इसका क्या मीनिंग होता है? जस्टपोज मतलब ये जो पैरामीटर्स है इनको हम आपस में देखते हुए स्टडी करेंगे, और स्टडी कैसे करेंगे? कंप्लीट होलिस्टिक, ओके, होलिस्टिक स्टडी होगी, ओवरऑल स्टडी होगी। ओके, इसके बेस पे ओवरऑल पैरामीटर्स के बेस पे ही हम बता सकेंगे कि वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स क्या है उस कंट्री का। सो in the context of MDG, okay, that is Millennium Development Goal, data was collected for 179 countries. Each of 5 indicators comprise 30 sub indicators, okay, 13 sub indicators. So it total form 37 indicators. This index, okay, this index were selected from the most appropriate database. So WGI, okay, World Governance Indicators has proved to be excellent index on the quality of governance in various nations, and thus indicate the preferred strategies to improve the गवर्नेंस सिस्टम इन वेरियस डोमेन। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स है मेनली ये यूज किए जा रहे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम। ओके, so another good governance indicator index has been launched in India by the Ministry of Personal Public Grievances and Pension। तो कुछ गुड गवर्नेंस इंडिकेटर इंडेक्स, ओके, मेनली किसने लॉन्च किया है? द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ओके, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विथ व्यू टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ गवर्नेंस इन द कंट्री। ओके, देश के अंदर जो गवर्नेंस है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको देखने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन है इन्होंने मेनली गुड गवर्नेंस इंडेक्स बनाया। ओके, सो इट इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस इनिशिएटिव एंड इंटरवेंशंस in the governance by state government and union territory. So based on the quantifiable data, the index help to states and the union territory to design and implement appropriate strategy for improving the performance of the governance. The good governance index focus on the 10 function areas. Okay, so what are these 10 functional area that mainly focus by the good governance index? First one is the agriculture and allied sector, then commerce and industry, then human resource development, public health, public infrastructure and utilities, economic governance, social welfare and development, justice and public security, environment, citizen centric governance. Okay, so mainly these all are the
main 10 functional area that is mainly focused by the good governance index. Okay, so each year on December 25, on the birth of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, is celebrated as a good governance day, okay, by the center government and government of state and union territory. So this is very important, you should very much know it, okay, very well know it about the good governance day, okay, why it is celebrated and on और किसके मेनली मेमोरेबल मतलब किसको याद करके ये सेलिब्रेट किया जाता है, ओके, ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ओके. So this is a good governance day. This, this celebration motivate public servant to rededicate themselves to the cause of establishing more effective governance system in crucial phase, okay, of the public life. Thus, comparative public administration is not confined to the conductive cross-national studies alone, but also involve cross-state and cross-region and cross-sector study within the country. So, this approach makes the scope and impact of the comparative public administration broader and more comprehensive. So, this is mainly about the, okay, comparative public administration, and the main focus we study is the वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स, ओके. मेनली हमने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स के ऊपर. इसके जो इंडिकेटर्स है, ओके, पैरामीटर्स है, ओके, सो दैट आर दी मेन पैरामीटर्स, मेनली 5 पैरामीटर्स ऑफ द वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स यूज टू मेजर द गुड गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री, ओके. सो इसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह से इंडिया ने भी, जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री है पब्लिक, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने भी कुछ गुड गवर्नेंस इंडेक्स बना है, जिसको मेनली यूज किया जाता है फॉर द एरिया, मेनली 10 एरियाज, ओके, टू चेक द गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ओके, विदिन द दिस 10 areas, okay. So this is all about the world governance index, okay. So that's all for this video. Thank you, bye bye.